Good evening, everyone. I hope you are doing well. I am Mrs. Pawar. I am from Mumbai and I have a qualified degree of B Pharmacy from Solapur University. And now I am pursuing a mass communication degree from Solapur University. Today, we are talking about attitude in psychology. First, we will talk about why I chose this topic. Attitude is a very important factor in our day to day life. Your attitude has a direct impact on how you communicate and collaborate with others, how you contribute to the culture of your work environment, and how you perform your daily tasks and responsibilities. Ultimately, your attitude shapes your success and your happiness. Now we will go with our topic attitude in psychology. इसके पीछे का मोटो इतना ही है कि आपका एटीट्यूड ही आपकी पहचान बनाता है. इन सोशल साइकोलॉजी an attitude is an evaluation of an object ranging from extremely negative to extremely positive. इन जनरल हम हमारे इर्द गिर्द देखते हैं या तो कोई इंसान एक्सट्रीमली पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है या फिर कोई एक्सट्रीमली नेगेटिव एटीट्यूड में रहता है. अलग अलग विचारवंतों ने एटीट्यूड की अलग अलग डेफिनेशंस बताई है. एज पर मार्टिन फिशबेन, an attitude is a learned predisposition to respond in a favorable or unfavorable manner toward people and objects and ideas or situation. And as per Michelle Hogg, an attitude is a negative or positive evaluation of an object which influences humans' behavior towards that object. Let's see the components of attitude. Psychologists such as Rosenberg, Eagly, Holland have given a three components model of attitude. According to this model, an attitude has following three components. First is cognitive component, second is affective component, and third is behavioral component. First, we will talk about cognitive component. Cognitive component is the set of information, facts, ideas and knowledge about an object. अर्थात किसी वस्तु के बारे में उपलब्ध सूचना के आधार पर ही उस बारे में अपनी धारणा बनाना या फिर कोई निर्णय देना. इसी आधार पर उस वस्तु के बारे में हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक होती है. फॉर एग्जाम्पल, an orange is rich in vitamins. It is good for skin and it has a good taste. And the next example is saver bulbs consumes less electricity than ordinary bulbs. It has a brighter light. It is more durable. The next component is affective component. These components consist of emotions and feelings towards an object. It can be liking or disliking, favoring or unfavoring, and positive or negative evaluating towards that object. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक ऑरेंज. मुझे ऑरेंज पसंद है. इसके पीछे हमारे इमोशंस जुड़े हैं, इसके पीछे हमारी लाइकिंग्स है. अनदर एग्जाम्पल इज़ I like saver bulbs. I like to use saver bulbs because saver bulbs are good. And the last component is behavioral component. Behavioral component is the tendency to behave towards the object. Examples: how the individual act towards the object depending upon cognitive and affective component. This component is a combination of cognitive and affective components. For example,
आई ईट ऑरेंजेस डेली। अर्थात मैं रोज़ ऑरेंज खाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑरेंज में विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वह स्किन के लिए अच्छे रहते हैं, उसकी टेस्ट भी अच्छी है, इसलिए मुझे ऑरेंज पसंद है और मैं हर रोज़ ऑरेंज खाती हूँ। द अनदर एग्जाम्पल इज़ आई बाय एंड यूज सेवर बल्ब्स in my home, and because it is good to use, it has brighter light and it is more durable. That's why I use saver bulbs in my home. The next content of our session is characteristic of attitude. The first characteristic is attitudes are relatively stable phenomena. An attitude is not a momentary feeling but a long held view of something. Though attitudes can be changed from time to time, but it is a relatively stable phenomenon that persists for a period of time. The next characteristic is attitude influenced by human behavior. So, the ego defensive attitude influences their behavior in such a way that their actions prevent them from psychological harm. The next characteristic is attitude has an object. An attitude object is the concept around which an attitude is formed and can change over time. The next characteristic is attitude are learned. Attitudes are learned through one's own experiences and through interactions with others. For instance, a positive attitude is developed or learned for a particular subject because of the positive association between a teacher and a student. The next characteristic is attitude are, attitude are predisposition. It means an attitude can be defined as a predisposition to respond in a favorable or unfavorable way to objects or person in one's environment. When we like or dislike something, we are in effect expressing our attitude toward the person or that object. The next content of our session is types of attitude. There are mainly four types of attitude, that are positive attitude, negative attitude, neutral attitude, and the last is second attitude. Now we will see types of attitude one by one. Firstly, we will see a positive attitude. A positive attitude is the guide to leading a positive life. If you are feeling down and having a particularly negative outlook on the way the things are going, just remember that attitude is everything and a positive attitude will lead you the positive attitude will lead you out of the darkest of time. यानी कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो वह अपने जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकता है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके उसमें सफलता हासिल कर सकता है। अगर किसी इंसान में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके साथ में आता है वो है कॉन्फिडेंस। मार्कस गार्वे कहते हैं, if you haven't confidence in self, you are twice defeated in the race of life. And with confidence, you have won even before you have started. यदि आपको स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीवन की दौड़ में बार बार हार चुके हैं और अगर आत्मविश्वास के साथ आप कोई जंग शुरू करते हो तो जंग शुरू होने से पहले ही जीत जाओगे। Likewise, positive attitude have happiness. Happiness is a very important factor in our day-to-day life.
खुशी वह चीज़ है जिसके लिए हर इंसान तरसता है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति इसे पाने में सक्षम हो पाते हैं। जितना सरल इसे परिभाषित करना है, उतना ही मुश्किल इसे प्राप्त करना है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर इसे लोगों और चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। खुशी ऐसी चीज़ है जो आपके साथ शुरू होती है और आपके आपके साथ ही समाप्त होती है। एंड द नेक्स्ट important factor in positive attitude is sincerity. सिंसियर व्यक्ति अपने जीवन में तमाम खुशियाँ प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसे किसी असुरक्षा का कोई भय नहीं सताएगा। ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च शक्ति से आशीर्वाद और कई चीज़ों में विश्वास भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। सिंसियरिटी के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन यह मार्ग बहुत आगे जाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। Now we will talk about the next type of attitude, negative attitude. A negative attitude is a disposition, feeling, or manner that is not constructive, cooperative, or optimistic. A bad attitude is like a flat tire, you can't go anywhere until you change it. यानी अगर आपके अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो एक फ्लैट टायर के जैसा है जिसको चेंज किए बिना आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। नकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि हर चीज़ में कमियां निकालना, छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर गुस्सा होना या उनसे लड़ाई करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, हमेशा खुद को ही बड़ा समझना और दूसरों को नीचा दिखाना, खुद की गलती न मानना। द नेगेटिव एटीट्यूड हैव एंगर। द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ आवर सेशन इज एंगर। एंगर इज योर बिगेस्ट एनिमी। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बताती है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन जब आप क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। अधिक क्रोध के चलते अवसाद, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग के साथ ही कई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जोखिम भी बढ़ जाती है। वैसे ही क्रोध की वजह से हमारे आपसी रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए क्रोध सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, द नेक्स्ट फैक्टर इन नेगेटिव एटीट्यूड इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन इज अ फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू कैन नॉट गेट what you want, something that causes you to feel like this. फ्रस्ट्रेशन मतलब यह एक चिंता है, अवसाद है और तनाव। यह एक चिंता, अवसाद और तनाव को जन्म देने वाली प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा थकान, अनिद्रा और सिरदर्द जैसे शारीरिक लक्षण पैदा कर सकती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो सकती है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। T.F. हॉज ने कहा है, टू कॉन्क्यूर फ्रस्ट्रेशन one must remain intensely focused on the outcomes, not the obstacles. The next factor of negative attitude is doubt. डाउट क्या है? तो डाउट इज अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट अबाउट समथिंग that you think is untrue or unlikely. Doubt kills more dreams than failure ever will. संदेह एक मानसिक स्थिति है जिसमें मन दो या दो से अधिक विरोधाभासी प्रस्तावों के बीच लटकता रहता है। उनमें से किसी के बारे में निश्चित नहीं हो पाता है।
भावनात्मक स्तर पर संदेह विश्वास और अविश्वास के बीच अनिर्णय है। संदेह किसी चीज़ का या किसी के बारे में विश्वास की कमी है। यह एक उधम मचाने वाली शक्ति है जो हमसे आनंद, आशा और विश्वास छीन लेती है और हमें चिंता और अनिश्चितता के रसातल में धकेल देती है। यह एक ऐसा डर पैदा कर सकता है जो हमारे दिमाग को कुरेदता रहता है और बहुत से लोग संदेह के बारे में बात नहीं करते हैं। Now, first we saw positive attitude, then negative attitude. Now we will see neutral attitude. What is neutral attitude? A neutral attitude occurs because a person either hasn't made up their mind or may don't know situation where they have needed to use an attitude. The neutral attitude represents a certain compromise or middle ground between the participant and objective attitudes. Somebody said, silence is the best response to a fool. There comes a time in everyone's life when we get very angry at someone and we have a lot to say. However, in such a situation, it is always good to keep your calm and remain silent. It may seem difficult not to say something at that point and express our anger, but silence is the best answer for somebody. The next type of attitude is second attitude. This is the one of most dangerous type of attitude. The second attitude has the caliber to destroy every image that comes in connection with a positive image. This attitude is more dangerous than negative attitude. It reflects a constant state of negativity and aggressiveness. It's difficult to navigate this type of attitude since it's rooted in one's personality and is very tough for people to change their viewpoints substantially. If you have any doubts from this session, you can comment below. Now we will stop here. Lastly, I will say live life to the fullest and focus on the positive. Thank you. Hope you enjoyed this session.